Hello everyone. Good morning all of you. My name is Deepak Kumar. I am the assistant professor in civil engineering department in San College of Engineering. My subject of teaching is surveying. Hello students. I am teaching the subject surveying. So what is surveying? Surveying is a branch of civil engineering in which we find out the relative position of the points of the object or of the surface. That point is above the surface, on the surface or below the surface. तो सर्वेइंग आपकी एक ऐसी आपकी सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट करते हैं. रिलेटिव पोजीशन का मींस होता है हम किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में करते हैं. तो जिसकी हम पोजीशन फाइंड आउट करते हैं वो वाला पॉइंट आपका जमीन पे हो सकता है, जमीन के ऊपर हो सकता है और जमीन के नीचे हो सकता है. ठीक है, तो ये आपकी साइंस और आर्ट दोनों है. आर्ट इसलिए क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम जो आपका कोई भी चीज होगी उसका मैप प्रिपेयर करेंगे. तो इट इज अ साइंस और आर्ट इन बोथ. देन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सर्वेइंग. कि आपकी सर्वेइंग की टाइप कितने टाइप की होती है. तो सर्वेइंग इज मेनली ऑफ द टू टाइप्स. फर्स्ट इज प्लेन सर्वेइंग एंड अदर इज ज्योमेट्रिक सर्वे. ठीक, सर्विंग आपकी दो तरह की होती है, दो प्रकार होते हैं. एक आपकी प्लेन सर्विंग होती है, दूसरा आपका ज्योमेट्रिक सर्विंग होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दी प्लेन सर्विंग. ठीक, तो प्लेन सर्विंग इज द सर्विंग, इट इज अ टाइप ऑफ सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट. तो आपका प्लेन सर्वे ऐसा सर्वे है जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी अर्थ की शेप है उसको कंसीडर नहीं करते हैं. हम उसमें अर्थ को एकदम प्लेन मान के सर्वे करते हैं. ठीक है, तो the survey in which the curvature of the earth is not taken into account. This type of survey is done for the area of the small. जो आपका छोटा एरिया होता है उसके लिए हम इस तरह की सर्वे को करते हैं. And the area is, if the area is less than 260 kilometer square, then this type of survey is done. Okay, next second geodetic surveying. तो geodetic surveying, geodetic means geodetic, it is made from the two words geo and dating. Geo means earth and dating means science. So it is the science of the earth. So we can say that it is a type of surveying. In this we the curvature of the earth is taken into account. जो आपकी अर्थ की शेप है, आपकी अर्थ कैसी होती है, आपकी अर्थ स्फेरॉइडल शेप की होती है. इसमें हम अर्थ की शेप को कंसीडर करते हैं. तो the types of survey in which the curvature we are doing discuss geodetic surveying. So it is a type of surveying in this we the curvature of the earth is taken into account. जो आपकी अर्थ की शेप है उसको मान के चलते हैं आपकी अर्थ की शेप किस तरह की है. ठीक है, तो आपकी अर्थ की शेप आपकी क्या है, जो आपकी स्फेरॉइडल शेप की आपकी अर्थ की होती है. So then in this type of the surveying we consider the curvature of the earth, and this type of survey is done for the area of the higher accuracy. And again this type of survey is done for the area of the big area, and when the amount of the area is greater than 260 kilometer square, then this type of survey is adopted. Okay, and the geodetic surveying is also called the triangulation surveying, because we divide the whole area into small triangle. After that find out the area of the whole area. Okay, then next the principle of surveying. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपके सर्वेइंग के जो प्रिंसिपल हैं वो कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, तो आपके सर्वेइंग के मेन दो प्रिंसिपल होते हैं. तो देयर आर बेसिक टू प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग, इन व्हिच फर्स्ट प्रिंसिपल इज वर्किंग फ्रॉम द होल टू पार्ट. ठीक, तो एंड सेकंड प्रिंसिपल द लोकेशन ऑफ द न्यू पॉइंट्स with respect to the other 2 points, in which the first principle is called the main principle, working from whole to part. Okay, now the first principle is working from whole to part. in the इसमें क्या करते हैं हम, जो आपका जो पूरा एरिया होता है उसको हम क्या करते हैं कि आज छोटे छोटे ट्रायंगलों में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, इट इज कॉल्ड द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, इन व्हिच we according to this principle we divide the whole area into small triangles. These small triangles are called the well conditioned triangle. Okay, so what is well conditioned triangle? The well conditioned triangle is a triangle in which each and every angle is not less than 30 degree and not greater than 120 degree. Then we can say that the angle is not greater than 30 degree and not more than 120 degree. ठीक, it is called the well conditioned triangle. After that the whole area is divided into the well conditioned triangle. We find out the area of the we find out the distance of the all the sides. Then we find out the area of the triangle. After that we add the area of the triangles, then find out the area of the whole sum. Okay, so
The whole area is into well conditioned triangle. Now we have find out the area of the this plot. ठीक है, then this plot is divided into the two triangles, and triangle ABD and the triangle BCD. It is the well conditioned triangle. Now the first triangle is triangle ABC, in which distance AB equals to A meter, and distance BD equals to B meter, and distance AD equals to C meter. The distance of these sides is measurement by the use of the chain or tape. The chain or tape should be of the greater accuracy. By that the errors should be minimized. Okay. After the finding the distance, we find out the area of the triangle by the Hero's formula. Now Hero's formula is under root s into s minus a into s minus b into s minus c. It is the formula by which we find out the area of a triangle, in which small a b c are the sides of the triangle, of ABC, and small s is the semi perimeter of the triangle. Small s is equals to semi perimeter of triangle. Now we have find out the value of the s. So s equals to 1a plus b plus c upon 2. Now it is a move to second principle of surveying. The second principle is to locate new points and new station with reference to the 2 points. ठीक है, हमें क्या है कि किसी एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है 2 पॉइंटों के रेस्पेक्ट में. ठीक है, तो हमें क्या है कि 2 पॉइंट पता होने चाहिए. वो 2 पॉइंट आपके 2 लाइन हो सकती हैं, 2 एंगल हो सकते हैं, या फिर आपका एक लाइन और एक एंगल हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पोजीशन ऑफ द न्यू पॉइंट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट. तो हमें कम से कम 2 मेजरमेंट के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो नाउ फर्स्ट ऑफ डिस्कस दिस 3 कंडीशन ऑफ द सेकंड प्रिंसिपल. नाउ फर्स्ट कंडीशन इज we have the find out the one line and one angle. Now in this figure the line AB is find out, and the angle D is also known to him. Okay, so we find out the position of the C point with respect to the line AB and the angle D. So it is called the second principle by the one line and the one angle. Now discuss the second figure. In this we find out the position of the point C with respect to the 2 lines. Here we have determined the 2 lines AB and the AC. So first of all we draw the 2 lines, line AB and line BC of the given distance. Then we locate the position of the point C. Okay, so this is the position by the 2 lines, and other 3 is we have known the 2 angles, angle A and angle B. Then we can find out the position of the point C. So first of all we draw the 2 angles, angle A and angle B. Then where 2 angles they meet, the point C is the new points. Okay, so students, in the today's class we have discussed the 3 things: the introduction of the surveying, the types of surveying, and the principle of surveying. After that the new topics we will discuss in the another class. So thank you very much.